Hello everyone, welcome back to my channel Fun of Steno. Myself Pragya. So friends, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 12 करेंगे. So, आई जस्ट होप जितनी भी प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज की हैं आपने उन सब की प्रैक्टिस की होगी. So, आज की क्लास का जो फर्स्ट सेंटेंस है, वी शैल बी लकी इफ वी गेट एनी मनी फॉर डूइंग द जॉब. So, we shall be lucky if we get any money for doing the जॉब. आई जस्ट होप अब तो मेरे को आपको बंदे नहीं बताना पड़ेगा कि कब स्ट्रोक डार्क होगा एंड कब लाइट होगा. ठीक है, तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे. अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए. मे बी द लंच कैन बी गिवन ऑन अ डिफरेंट डे. मे बी द लंच can be given on a different day. Next sentence is, a talk was to be given on the topic feeding the family. A talk was to be given on the topic feeding the family. Next sentence is, Eva was talking of going to Manitoba in May. Eva was talking of going to Manitoba in May. Next sentence is, if they wish to make any money they will have to do the job. In a different way. Next sentence is, the wood was too thick it was an inch in width so we had to ship it back. Next sentence is, we wish to know if it will make any difference to them
if we ship the load of coal today. Okay, so we wish to know if it will make any difference to them if we ship the load of coal today. Okay. Next sentence is the change may be put into effect in May. The change may be put into effect in May. Next is we have no wish to make a change which will affect so many, but they have a different way of looking at it. Okay, and the last sentence of this video is if we can think of any way of doing the thing in a different way, we shall ask them to come in to see us. Okay, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आज हमने एक्सरसाइज नंबर 12 हमने पूरी कंप्लीट की है. लाइक ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं है. सो इसको हमने एक ही पार्ट में कंप्लीट किया है. सो आज जो भी किया है उसकी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा. एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू.